Let me begin by congratulating my alma mater, the Institute of Hotel Management in Chandigarh, for being so quick and responsive to my request to host a Coach on Campus session here today. Huge round of applause for the institute. I am beyond thrilled. There are so many memories of so many rooms as I pass by that I can recollect of my own time as a student here, 96 to 99, that is going back 25 years almost, right? And there is nowhere else in the world you can get this attention to detail. I drink coconut water during my talks, and I used coconut water last time I was here, more than a year ago, and I show up again 1 year after, and guess what's on my table? Coconut water. So you are in the right place. You are in the best hotel management institute in Southeast Asia, without a doubt. Give yourselves a round of applause for that. And I am confident after today's session, we will have so many queries resolved, not only for students within these four walls, but also outside these four walls. So let's begin with the first question of the day. So first of all, I would like to thank you for this opportunity. My pleasure. Sir, coming to my question. Sir, in today's scenario, we see that students are directly opting for their masters like MBA. Mm-hmm. So, sir, what do you feel like is the right time for us to opt for the same, being a hospitality graduate? So what is the right time for us? Hospitality graduate wants to go for an MBA immediately after graduation. Should you do it? Should you not do it? That's an interesting question. Somehow in this country we have a huge desire for degrees, and the more degrees we do, somehow we have this feeling the more educated I am. And the more educated I am, now I need a better job that suits my profile. So it seems like that you're creating this for yourself. It's an interesting question. We'll take it in detail shortly. There's a restaurant in my city. They make very nice pizzas. Excellent chef. Very authentic food. I go there often. But when I asked for a glass of red wine, it came to me chilled. Now you tell me, should this person be doing an MBA? At one of the most prestigious resorts in Jaipur, when I had to give a speech, next to my podium, I needed a small table, small coffee table. So I asked the banquet manager, I said, can I get a coffee table to keep my water and all these things? I keep it next to the podium. He said, no, sir. We do not have a table. I said, did you look for a table? No, sir, we have a policy. We don't move furniture. We have a table, but it's somewhere else. In banquets, I don't have a table. I said, really? Who made this policy? My general manager, he made the policy. I said, okay, fine. I said, I will go to the lobby and I'll pick up one of the tables and I'll put it back after 1 hour. There's nothing he could do. Should this person be doing an MBA? Not really. So here's the thing. Here's the thing. I understand the pressure on you. I understand the stress on you. I had it too when I was here. In fact, मेरी जो choices रही career की, वो हमेशा उन्होंने surprise ही किया मेरे family members को. और लोग अलग-अलग languages में अलग-अलग expression देते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े expression देते हैं. जैसे भी कोई ये पूछेगा कि आपने hotel management क्यों choose की? और पंजाबीज़ में simple expression होता है, उसे कहते हैं. वो इतना लंबा चौड़ा sentence नहीं पूछते, एक expression होता है, hotel management है. तो मेरी life कुछ ऐसी रही है कि बार बार लोगों को यही, मेरे आसपास वालों को, रिश्तेदारों को यही कहना पड़ा है, राइट? और जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए यार. जिंदगी ऐसे जियो कि आसपास के लोग कुछ साल बाद ये कहें, हैं तो ये कर रहा है, यू आर डूइंग दिस एंड दैट्स. सो ये प्रेशर मेरे ऊपर भी था. और आई एम नॉट एन MBA टुडे. आई हैवंट डन एन MBA. आई स्पीक टू सम ऑफ द लार्जेस्ट corporations in this country and across the world. I'm not boasting about it, right? But often I have like people from the top B schools in the world sitting in front of me, but that's okay. I mean, see, what you need more to succeed, not only in the service industry or any industry, is to learn how it works. And how will you learn that? Theory won't be enough. That's the thing. You will need to expose yourself
to the practical dynamics of that game. एक वीडियो है काफ़ी पॉपुलर विच इज़ कॉल्ड थैंक यू ISB फॉर रिजेक्टिंग मी। और मेरे को भूत सवार हुआ था MBA करने का, GMAT की प्रेपरेशन की, जॉब छोड़ के ब्रेक लेकर, कोचिंग नहीं थी सिटी में, खुद प्रिपेयर किया, इतने मार्क्स स्कोर उतना अच्छा नहीं आया जितना मैं चाहता था। आई मीन आइडियली आई शुड हैव स्कोर्ड 700 720, आई स्कोर्ड अराउंड 640 विद माय सेल्फ स्टडी which was not good enough, but ISB, long story short, they have one campus here, but the main campus उस समय सिर्फ हैदराबाद में होता था। So I applied and they rejected, and I think that's the best thing that ever happened to me. So I created a video. कुछ ना हो तो वीडियो बनाओ उसका, right? होगा क्या होगा, वही जो मंजूर खुदा होगा। कुछ भी ना हुआ तो तजर्बा तो होगा, तो तजर्बा हुआ और उस पर हमने वीडियो बना दिया, बोला थैंक यू। वाई? क्योंकि अगर मैं सिलेक्ट हो जाता तो मेरी लाइफ का जो ट्रेजेक्ट्री है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाती। आई वुडंट बी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग टुडे, बिकॉज वो 20-25-30 लाख का खर्चा आता, उसका लोन लेता उस समय, या अपने फाइनेंसेस से निकालता, उस साल में निकालता आउट ऑफ माई वर्किंग लाइफ। सो मेनी थिंग्स वुड हैव चेंज्ड, लाइफ वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। एंड व्हाट आई वांटेड टू गेन इन द प्रोसेस, देखिए अगर MBA डिग्री आप सिर्फ अपनी वैलिडेशन के लिए करना चाह रहे हैं कि मेरे को लोग और इज्जत दें, मेरे रिश्तेदार मेरे को ये बोले यार ये बच्चा पढ़ा लिखा है, नालायक नहीं, और मेरी फैमिली तो मुझे हमेशा नालायक ही समझती थी क्योंकि मेरी फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं। अब वो उसका मुकाबला मैं कैसे कर लूंगा? उस समय तो होटल मैनेजमेंट डिग्री भी नहीं होती थी, इट वॉज अ डिप्लोमा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो फिर दैट शुड नॉट बी द ड्राइविंग फोर्स, योर डिजायर टू लर्न शुड बी द ड्राइविंग फोर्स। इन फैक्ट सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल alumni ऑफ दिस इंस्टीट्यूट did not even go abroad. They completed this program and they stayed for the entire length of their careers here in India itself. And some of them are now vice presidents and directors of some of the biggest hotels. So ये एक I think trend है और एक तरीका है खुद को वैलिडेट करने का। अब कॉटन की शर्ट मैं लेकर अच्छे से टेलर से सिलवा लूं और मेरे को फिट अच्छी आ रही है और मटेरियल अच्छा था, पर उस पर लेबल नहीं लगा, उस पर लेबल नहीं लगा। वो जो पंजाबी सिंगर्स जिन लेवल्स के बारे में बातें करते हैं, राइट? तो अब मैं सोचूंगा यार ये ना होता है ना, ये माइंड में आता है ना यंगस्टर्स के, यार ये तो दर्जी की सिली हुई कमीज है। कितने लोग पहनते हैं? बाय द वे आई डू इट नाउ आफ्टर ऑल ट्राइंग ऑल द बिग लेबल्स, ऑल माय क्लोथ्स आर स्टिच्ड बाय माय टेलर, कस्टम मेड, राइट? व्हाई? बिकॉज दे फिट सो वेल। हु केयर्स अबाउट द लेबल? वो टाइम गया, वो एज होती है जब वो एक दूसरे के कॉलर पे चेक करते थे, यहाँ पे क्या है, थिंग्स लाइक दैट, एंड यू यूज्ड टू फ्लॉन्ट, ये है, ये दिस दैट। आई एम बियॉन्ड दैट नाउ। और वही एजुकेशन के साथ भी क्यों नहीं? क्यों हमें क्या साबित करना चाहते हैं, किसको साबित करना चाहते हैं? और लोग तो कभी भी इंप्रेस नहीं होंगे। हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी बंदे ने खूबसूरत बंगला बनाया, इतना कितना पैसा लगाया होगा उस बंदे ने, मेरे को आइडिया नहीं, कितने प्यार से बनाया होगा। तो काफी लोग गए उसको बार बार, सभी बैचेस में जा रहे थे सारे फ्रेंड्स मिलने, तो हम भी गए। और जैसे बाहर निकले तो 10 लोग थे और 10 अलग अलग ओपिनियन। पैसा थोपिया ही है, टेस्टफुल ही नहीं खर्चा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे को हंसी आ रही है अकेले को बैठ कर सुनते हुए। लाइफ के ऑब्जर्वर बनो। क्या बनना? जब ऑब्जर्वर बनोगे ना, आपको हंसी भी आएगी एट टाइम्स और सीखोगे भी आप। देखो उस बंदे ने कितनी मेहनत लगाई होगी यार, और करोड़ों खर्चे हैं उसने, और कोई खुश कोई नहीं था, खुश कोई नहीं था। किसी को जेलसी थी तो कोई क्रिटिसिज्म कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो यही डिग्री के साथ भी होने वाला है। आधे बोलेंगे होटल मैनेजमेंट के बाद MBA का क्या कनेक्शन है? मेरे कई रिश्तेदार आते हैं, ये पूछते हैं उसका क्या कनेक्शन होगा। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैं कहा उसमें भी मैनेजमेंट शब्द आता है ना, होटल में भी मैनेजमेंट आता है, इसमें भी मैनेजमेंट आता है, बन गया कनेक्शन। लोगों को ऐसे ही समझाना पड़ता है यार, लोग नहीं समझेंगे और तुम्हें समझाना भी नहीं। आज तक मेरे प्रोफेशन को लोग नहीं समझ पाए ये क्या होता है मोटिवेशनल स्पीकर, करते क्या आप, जॉब क्या आपकी? मेरी जॉब नहीं है, पर इसमें करते क्या हो? बस ये करता हूँ। नहीं ये तो हॉबी हो गई, आप करते क्या हो? और मैं कहा भाई यही करता हूँ। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, पर मुझे क्या करना है समझाकर। मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं अपनी इंडस्ट्री के बारे में, और आपको ये सफिशिएंट लग रहा है कि नहीं? आपको लग रहा है और क्लासरूम में बैठ के और सीख कर फिर आप और पावरफुल बनोगे, डू इट यार। आई मीन गो फॉर इट। बट ड्राइविंग फोर्स लोगों को खुश करना नहीं होनी चाहिए। ड्राइविंग फोर्स शुड बी फॉर यू टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री विल टीच यू थ्रू एक्सपीरियंसेस। वो जिस दिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा है सब लोग के नहीं, वो जब रगड़े लगने शुरू होंगे ना, और मेरे को लगा था सूर्या होटल दिल्ली में, मैंने वीडियोस भी बनाए उसके ऊपर। इट्स कॉल्ड SGS लाइफ स्टोरी, सब देखना वो वीडियोस। और उनके ऊपर एक है पानी के ग्लास कैसे साफ किए जाते हैं।
मेरी ड्यूटी लगी पहले दिन, और जैसे ना ईगो कितनी होती है, होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट IHM चंडीगढ़ से आए हैं, बड़े है ना टहलते हुए पहुंचे, तो रेस्टोरेंट मैनेजर कहते हैं अच्छा बेटा ये बहुत फुदक रहा है तो तुम ना ग्लास साफ करो आज। ठीक है जी, मैं ग्लास साफ कर देता हूँ। ग्लास डिश वॉशर से आए और मेरी ड्यूटी लग गई, मैंने डैम्प क्लॉथ से ग्लास क्लीन कर दिए। तो एज ऑल ऑफ यू वुड नो दैट इज द राइट वे और रॉन्ग वे? That's the wrong way. So, Mr. Puri, who used to be the restaurant manager, very active, very, I'm saying the show time, he was like always very energetic gentleman. He came in. बोला एक ग्लास साफ हो गया? मैं कहा हो गया सर। उसने एक ग्लास उठाया, ऐसे लाइट के अगेंस्ट पकड़ा, ये कौन से इंस्टीट्यूट से आए तुम? कहां से बेकार, कहां से उठ के आ जाते आजकल? क्या हो गया? So he said, टेक अ बकेट ऑफ बॉइलिंग हॉट वाटर, उनके ऊपर तुम ये हाई बॉल ग्लासेस सारे अपसाइड डाउन उनको होल्ड करोगे, उनको फिर क्लीन क्लॉथ से जिसमें लिंट ना हो उससे क्लीन करोगे, लाइट के। ओ माय गॉड, दैट वाज माय फर्स्ट डे। मेरे को लगा मैं इतना बेकार हूं, मेरे से ग्लास भी नहीं साफ हो रहे। पर उस दिन रियलिटी की समझ आती है। मैं फिर सिडनी से मैंने एक एडिशनल कोर्स किया होटल मैनेजमेंट का। उसके बाद मेरी फर्स्ट जॉब लगी मैरियट यूएस में। सो व्हेन आई वेंट टू मैरियट यूएस, आई वाज लाइक, ओ ग्रेजुएट ऑफ द टॉप होटल स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया, and here I am working as a management trainee at Marriott International in the US in Arizona, Camelback Inn. So my restaurant manager, ये restaurant managers में बड़ी कला होती है, तुम्हारी हवा निकाल देंगे। Said, okay, welcome to America. I said, thank you. Said, you see that red carpet from the parking, from the entrance of the restaurant, coming all the way to the restaurant, in the walkway के ऊपर carpet था. Take this vacuum cleaner and vacuum the entire thing. It's like, are you serious? I mean, you want me to? You want me to clean that? And मैं कोई ऑप्शन थी नहीं, मैंने वैक्यूम क्लीनर पकड़ा और मैंने क्लीन करना शुरू कर दिया। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कहा यार ये है पहला दिन अमेरिका में, मेरे परिवार वाले देख लें मैं कर क्या रहा हूँ है। तो but then all those experiences, they shape you, they make you who you are. By the evening, the next evening, my second day in the US, हम रूम में थे, हमें होटल में ही रूम मिला हुआ था to stay for a few weeks. हमारा फोन बजता है, this is a banquet manager. What sizes are you guys? In terms of the jacket size. I said, well, I'm size 42, my friend is size 40, etc. I said, okay, I need 2 people in banquets right now. I just came on the flight yesterday. Said, do you want to work? Do you want to make the first few US dollars? I said, of course. So हम वो जैकेट पहन के चले गए। वो डॉक्टर्स की मीट हो रही थी और 800 लोगों की मीट थी और उनको डायरेक्शन बतानी थी और हमें अशर्स बनना था। So we had to stand at the door and guide people where to go. And so here is this map which we couldn't understand. We're like twisting it all around, and me and my friend are discussing, okay, this table number is here. By the time the crowd is already coming in, it's my second day, right? It's my second day, and here I am, and all these doctors are coming up to me, say, where is table number 31? Where is, they'll name the hospital. Where are those people sitting? And I'm like twisting the map around like this, trying to make sense of it. But anyhow, I managed. And that's how you learn. No MBA would teach me that. No MBA would teach you that. So you need to understand the practical perspective. You need to focus on learning interpersonal skills here now, more than learning other skills. And then supplement your education with short courses. Okay? So let's say you're a hotel management graduate, but you want to learn finance. Do you know you can go to IIM Ahmedabad or Bangalore or any of the top IIMs and attend a 1 week to 2 week course. They're moderately priced. They're not too expensive as compared to international institutes. You can enroll yourself in those courses and you can learn and get a certificate from them on campus. You can do it, of course, you know how to do it virtually. But there are options available to do it on campus also. So what I'm trying to say is, MBA नहीं भी हुई तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के काफ़ी और जरिए हैं, आप उनके ऊपर फोकस लगाएं। मेरी जो टॉप रिकमेंडेशन आपसे रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आप रियल वर्ल्ड में इमर्स करें, उसको फेस करें, उससे सीखें, 4 धक्के लगेंगे, रियलिटी चेक होगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स की पहचान होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्लासरूम में नहीं हो पाएगी, कुछ हद तक हो पाएगी। Let's say you're given an opportunity to go to stage or other things. But when you are out there in a flourishing 5-star property, whether you're in the lobby or things like that, you will discover new sides to your personality. And then that will guide you forward. Your best career coach are your own experiences, which you will learn when you face difficulties. The best MBA that you can get is a busy hotel lobby where you are solving problems. Okay? When I was the operations manager for a hotel in the UK,
So it was very lean staff. So I was security head also. I was food and beverage manager also. Since I was living on the property and I was looking after, I was sort of the HR manager also. I was pretty much running the place from multiple different angles, you know. So some days kids from the street will come and they start drinking alcohol on your property. You know, what do you do? I mean, there's no security. I am the security. There's no backup. I am the backup. So who do I call? So I just go up to them and solve those problems. And that is going to be your real MBA. So I hope that answers your question. Thank you.